Welcome again, my dear friends. Today we'll talk about synthetic rubbers. In previous video we talked about natural rubber and its vulcanization for the improvement of its properties. Now we are going to talk about synthetic rubbers. So what are synthetic rubbers or a synthetic rubber? These are basically, so these are either the homopolymers of 1,3-butadiene or its derivatives that include chloroprene, Chloroprene is basically the derivative of 1,3-butadiene, or so these are either the homopolymers of 1,3-butadiene या उसके derivatives जैसे chloroprene, or the copolymers of, or we can say copolymers in which one of the monomeric unit is 1,3-butadiene. इनको हम नाम देते हैं synthetic rubbers. Let me explain you homopolymers. I told you in previous videos also that homopolymers वो वाले polymers हुआ करते हैं जिनमें एक ही किस्म का monomeric unit पाया जाता है. For example, 1,3-butadiene combine होगा, it leads to polymerization to form poly 1,3-butadiene. So there is a single monomeric unit, that's 1,3-butadiene. It's a homopolymer. Similarly, अगर आप बात करेंगे इनके derivatives की, जैसे chloroprene है, we'll be talking about that from short while. So chloroprene है, chloroprene combine होके एक polymer बनाएगा जिसका नाम है neoprene. That is also a synthetic rubber. So this is basically a single monomeric unit, hence it's a homopolymer. अब copolymers क्या होते हैं जिनमें एक से ज्यादा monomer होंगे different, so which contains more than one monomeric unit and are different, they are called copolymers. And यहाँ पे एक condition है कि one of the monomeric unit must be 1,3-butadiene. So let's have an example over here. For example, हमारे पास है, अगर monomeric unit हमारे पास है, so we write here monomeric unit or units, and we write here polymer. We write here polymer. So number one is, अगर आपके पास simply a 1,3-butadiene होगा as a monomeric unit, that is CH2 double bond CH single bond CH double bond CH2. So this is 1,3-butadiene. तो यहाँ पे जो पॉलीमर बनेगा दैट्स कॉल्ड एज पॉली 1,3-butadiene. तो ये जो है ये ऐसे बनेगा, ये डबल बॉन्ड आपको बीच में शिफ्ट करना है. सो दिस मूव्स हियर एंड दिस मूव्स हियर. ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा. जब इसका दूसरा मॉलिक्यूल होगा तो उसका नेगेटिव इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और इसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा टू फॉर्म द पॉलीमेरिक यूनिट. सो इट विल बी लाइक दिस. CH बीच में डबल बॉन्ड आएगा, इट इज CH सिंगल बॉन्ड CH2 होल N हम करेंगे. दिस इज कॉल्ड एज पॉली 1,3-butadiene. नंबर 2 हमारे पास है, दिस इज अ होमोपॉलीमर. why this is a homopolymer? Because there is a single monomeric unit, that's 1,3-butadiene. नंबर 2 हम लेंगे क्लोरोप्रीन. अगर आपके पास मोनोमेरिक यूनिट होगा क्लोरोप्रीन. सो व्हाट इज क्लोरोप्रीन? इट्स बेसिकली 2-chloro. अगर हम IUPAC नाम के हिसाब से इसका देखेंगे, इट्स 2-chloro 1,3-butadiene. That is like this, CH2 double bond CCl single bond CH double bond CH2. So it's 1 2 3 4, 2 पे क्लोरो है, so it's 2-chloro 1,3-butadiene. That's called as chloroprene. ये जब कंबाइन होंगे to form the polymer, so इसका corresponding polymer क्या बनेगा? ये ऐसे ही लिखना है CH2, इसको डैश करना है, डबल बॉन्ड बीच में आएगा, तो it's like this.
CH सिंगल बॉन्ड CH2 होल हम N करेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज पॉलीक्लोरोप्रीन, दैट्स कॉल्ड एज नियोप्रीन। इसका नाम दिया गया है नियोप्रीन। सो नियोप्रीन इज आल्सो ए सिंथेटिक रबर एंड poly-1,3-butadiene इसका कॉन्फ़िगरेशन यूजुअली सिस रहता है, सो ये भी एक सिंथेटिक रबर कहलाता है। सो दीज आर द टू, बेसिकली यहाँ पे सिंगल मोनोमेरिक यूनिट है, सो इट्स अ होमोपॉलीमर। यहाँ पे एक सिंगल मोनोमेरिक यूनिट है, दैट इज क्लोरोप्रीन, इट्स अ होमोपॉलीमर। एंड ये 1,3-butadiene है, ये इसका डेरिवेटिव है। कैसे? एक हाइड्रोजन को निकाल के इसकी जगह क्लोरीन डाल दिया गया, सो इट्स द डेरिवेटिव ऑफ दिस, दैट्स व्हाट वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर, दैट इट इज ईदर द होमोपॉलीमर ऑफ 1,3-butadiene और इट्स डेरिवेटिव दैट इज क्लोरोप्रीन। द नेक्स्ट इज कोपॉलीमर्स। सो हमारे पास नंबर 3 है। नंबर 3 इज अगर आपके पास मोनोमेरिक यूनिट होंगे, एक तो 1,3-butadiene दैट इज देयर, प्लस इफ देयर इज स्टाइरीन, तो ये एक रबर बनेगा, दैट्स कॉल्ड ब्यूटाडाइन स्टाइरीन रबर या स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। इसको हम एस स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर SBR के नाम से भी जाने जाते हैं। सो व्हाट द पॉलीमर विल बी, दैट इज कॉल्ड एज Buna-S। सो Buna-S आपके पास एक पॉलीमर बनेगा। Bu स्टैंड्स फॉर, हियर जो ये Bu है, Bu स्टैंड्स फॉर ब्यूटाडाइन, दैट इज दिस 1,3-butadiene एक मोनोमेरिक यूनिट, एंड S स्टैंड्स फॉर स्टाइरीन, दैट इज द नेक्स्ट मोनोमेरिक यूनिट। अब ब्यूटाडाइन आपके पास स्ट्रक्चर पता है, स्टाइरीन इज लाइक दिस, स्टाइरीन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है जब हम लोगों ने पढ़ा था कंडेंसेशन, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन। दिस इज कॉल्ड एज विनाइल बेंजीन एंड दैट इज कॉल्ड एज स्टाइरीन। सो ये जो है आपका Buna-S बन गया। एंड व्हाट इज Na इज एक्चुअली सोडियम, बिकॉज द पॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-butadiene and styrene occurs in the presence of sodium metal. So it gives rise to a polymer that's called as styrene butadiene rubber, or we can simply say Buna-S. So it's a copolymer. How this is a copolymer? Because there are two different monomeric units present in it. One is 1,3-butadiene and next is styrene. And number 4th category is 1,3-butadiene and plus there is acrylonitrile. Acrylonitrile is actually vinyl cyanide. So instead of benzene, there is here C and cyanide. So it's vinyl cyanide, and that's called acrylonitrile. And there is 1,3-butadiene as the next monomeric unit. Since there are two different monomeric units, so it's a copolymer. And once they combine, it forms a kind of monomer that's called as Buna-N. Bu again stands for butadiene, that is 1,3-butadiene, and N stands for here vinyl cyanide or acrylonitrile. It's a nitrilic monomeric unit, and Na is again sodium, that is here this reaction occurs in the presence of sodium metal. I hope you understand it. So these are 4 types of rubbers which are synthetically prepared. And now what is the reaction, how they are obtained by means of reactions? We will write them first and we will write some of the properties also. So number 1 हम लेंगे cis polybutadiene, इसमें क्या है, इसमें आपके पास ब्यूटाडाइन है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये पॉलीमराइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट कॉल्ड Ziegler-Natta कैटलिस्ट। Ziegler-Natta कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट होता क्या है? इट इज बेसिकली, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इससे पहले भी, दैट इज टेट्राक्लोरोटाइटेनेट एंड ट्राइअल्काइल, और वी कैन से ट्राइइथाइल अल्युमिनियम और टेट्राक्लोरोटाइटेनेट, मिक्सचर ऑफ दीज टू इज कॉल्ड एज Ziegler-Natta कैटलिस्ट। इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये पॉलीमराइज होते हैं, इट फॉर्म्स अ पॉलीमर दैट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2
होल एन हम करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज सिस पॉलीब्यूटाडाइन। एंड इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिस होता है। कैसे? आप ऐसे करिए, इट इज CH2H डबल बॉन्ड CH2 अगेन हियर ऐसे। So two similar groups on the same side, it becomes a cis configure. So this is basically a cis polybutadiene. इस तरीके से जो है आपका पॉलीमर बनता है। I hope you understand it. इसकी प्रॉपर्टीज जो है they are exactly same as that of natural rubber. So properties are almost same. Properties are almost same as that of natural rubber. वो हमने already पढ़ा है। Now next is neoprene. So we have another polymer that is neoprene. Neoprene का monomeric unit chloroprene होता है। So chloroprene क्या है? It's basically like this. So monomer is basically chloroprene. That is CH2 double bond C single bond Cl single bond CH single bond CH2. This is called as chloroprene, or we can say 2-chloro-1,3-butadiene. ये polymerize होता है। कैसे? So this polymerizes like this. So we are having actually CH2 double bond CCl, then single bond CH double bond CH2. This occurs in the presence of peroxides or oxygen. आप इसको peroxide डालते हैं या फिर ऑक्सीजन डालते हैं तो ये पॉलीमराइज होकर आपका बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड बीच में चला जाएगा तो ये बनेगा C, देन देयर इज डबल बॉन्ड, ऊपर क्लोरीन है, देन देयर इज CH सिंगल बॉन्ड, देन देयर इज CH2 होल एन ऑफ करेंगे, दिस बिकम्स नियोप्रीन। दिस इज कॉल्ड एज नियोप्रीन। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज नियोप्रीन। It is basically it's also similar to that of natural rubber, but the point is it is inferior to natural rubber in some properties but superior in case of stability. हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ points. This is superior. This is superior than natural rubber. This is superior than natural rubber with respect to its stability towards oxygen. Next, resistant to oils, गैसोलीन मतलब पेट्रोल, डीजल, अदर सॉल्वेंट्स। अगर आपको याद होगा नेचुरल रबर अफेक्ट होता था सॉल्वेंट से, दैट वाज आल्सो गेटिंग अफेक्टेड बाय मींस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, सो इट इज रेजिस्टेंट ओवर हियर, सो इट्स हैविंग सुपीरियरिटी ओवर दैट ऑफ नेचुरल रबर। एंड नेक्स्ट इज इट्स देयर बाय यूज्ड, ये जो है इट इज देयर बाय यूज्ड to make hoses. Hoses क्या होते हैं? Hose flexible pipes होते हैं, flexible pipes जिनमें आप फ्लूइड कैरी करेंगे। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास फायर सर्विस होती है उनके पास जो पाइप्स होती हैं दे आर बेसिकली फ्लेक्सिबल पाइप्स, तो उन्हीं को हम नाम देते हैं hoses. So we can use this neoprene synthetic rubber in these hoses. And shoe heels में भी ये इस्तेमाल होता है, स्टॉपर्स में भी ये इस्तेमाल होता है, स्टॉपर्स, बेल्ट्स एक्सेट्रा। सो इन सब में जो है आपका नियोप्रीन इस्तेमाल होता है, चाहे वो होज बनाने के लिए हो या शू हील्स, आपके जो जूते हैं जूते को जो हील्स है वो बनाने में, या स्टॉपर्स, रबर स्टॉपर्स जैसे होते हैं वो भी बना सकते हैं आप नियोप्रीन से, बिकॉज दे आर
stable towards oxidation. They are resistant to oils, gasoline, and other solvents. They don't get affected by solvents. And this is having a superior property over that of natural rubber. I hope you understand it. Number 3 हमारे पास है Buna-S. So Buna-S is actually styrene butadiene rubber. आप यहाँ पे लिख सकते हैं SBR, that is styrene butadiene rubber. ये copolymer है because it consists of 2 monomeric units. One is styrene. So आपके पास है CH double bond CH2. यहाँ पे butadiene है. ये जो polymerize होते हैं, they get polymerized. Polymerize कैसे करते हैं आप? Polymerization. तो ये डबल बॉन्ड जो है ये यहाँ पे चला जाएगा, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस. तो ये बीच में चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस. ये माइनस और ये प्लस कंबाइन होता है और ये कंटिन्यू चेन चली जाती है. सो व्हाट वी कैन मेक इट एज, हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे बेंजीन रिंग, देन देयर इज CH. क्योंकि ये जब यहाँ पे प्लस बना तो इसका जो माइनस बना ये यहाँ से अटैच होगा. वी पुट हियर डैश एंड देन इट्स हियर सिंगल बॉन्ड नाउ CH2. ये CH2 कंबाइन होगा इस CH2 के साथ. सो वी हैव CH2 सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा CH, ये बीच वाला बनेगा डबल बॉन्ड CH ये वाला. देन देयर इज अगेन सिंगल बॉन्ड CH2. ये कंबाइन होगा विद द नेक्स्ट स्टाइरिन मॉलिक्यूल, तो हम डैश करेंगे, होल करेंगे N. तो दिस इज कॉल्ड एज स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर. इस तरीके से जो है आपको ये बनाना है. दिस इज SBR, styrene butadiene rubber, or we can simply say as Buna-S. And this occurs in the presence of sodium metal. और आप कितना लेते हैं? आप लेते हैं इसका 1:3 रेशो. मतलब ये कि आप लेते हैं स्टाइरिन का 25% एंड ब्यूटाडाइन का आप लेते हैं 75%. तो फिर उनको मिक्स करके पॉलीमराइज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ रबर दैट्स कॉल्ड Buna-S. एंड उसकी प्रॉपर्टीज है क्या? इट्स वेरी टफ. सो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इट्स है वेरी टफ. टफ मीन्स नॉट इजीली ब्रोकन. It's having high abrasion resistance. Abrasion means wear tear जो है फ्रिक्शन के हिसाब से. I told you yesterday also, जब wear होना, tear होना या by friction तो वो नहीं होती है easily इसको, because it's having high abrasion resistance. It doesn't get weared, it doesn't get teared, it doesn't get grinded by means of friction. So it's having high abrasion resistance. It's having high load bearing capacity. It can bear high load. So it's having high load bearing capacity. That's a good sign of this polymeric material. Hence it is used for auto tires. क्योंकि उनमें बहुत सारा लोड आप डालते हैं, या फिर फ्लोर टाइल्स. इसे आप फुटवेयर में भी इस्तेमाल होता है. ये फुटवेयर कारपेट्स या इंसुलेशन में इस्तेमाल होता है, एज वेल एज बबल गम्स. So these are some of the uses of this particular polymer, that is SBR. ऑटो टायर्स में इस्तेमाल होता है, फ्लोर टाइल्स बनाने में इस्तेमाल होता है, फुटवेयर के जो सोल है वो बनाने में इस्तेमाल होता है, इंसुलेशन, बबल गम्स में भी इस्तेमाल होता है. इट्स वेरी टफ, हाई एब्रेजन रेजिस्टेंस, हाई लोड बेयरिंग कैपेसिटी. These are the 3 important uses or important properties of SBR, that is Buna-S. And next, the last one is basically Buna-N. So what is it? Number 4 is Buna-N. Buna-N maybe it's also a copolymer in which we have acrylonitrile, that is CN over here, double bond CH2, that's vinyl cyanide, and it combines with 1,3-butadiene and they get polymerized in the presence of sodium. So what we get is ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे बीच में आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, ये प्लस और ये माइनस कंबाइन हो जाएगा. ये जो प्लस बना वो इस नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा ऐसे. तो ये चेन कंटिन्यू चलेगी जैसे हमने अभी बनाया. तो व्हाट वी कैन गेट इज CH
यहाँ पे CN है आपका, यहाँ पे डैश कर देंगे, ये सिंगल बॉन्ड बन गया, ये बनेगा CH2, ये और ये मिलेंगे तो इट इज CH2, ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, इट इज CH, इट्स CH ओवर हियर, दैट इज दिस CH, फिर डबल बॉन्ड बनेगा CH, फिर अगेन सिंगल बॉन्ड बनेगा CH2, होल N हम करेंगे, अगर ये N टाइम्स है तो इट गेट्स यू S, it gets you Buna-N, that is this kind of rubber. I hope you understand it. और इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसके ये प्रॉपर्टीज है कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं टू मेक ऑयल सील्स, सो यूज टू मैन्युफैक्चर, यूज टू मेक ऑयल सील्स, ऑयल सील्स एंड होजेस। हम इससे होज भी बनाते हैं, फ्लेक्सिबल पाइप्स जैसे मैंने अभी बात की, और ऑयल सील्स जो है वो हम बना सकते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉलीमर दैट इज Buna-N. I hope you understand it. These were some of the synthetic rubbers, and the point to be noted is that these are basically either the homopolymers of butadiene as such, और इट इज डेरिवेटिव दैट्स क्लोरोप्रीन, जिससे नियोप्रीन बनेगा, और कोपॉलीमर्स मतलब एक से ज्यादा मोनोमेरिक यूनिट डिफरेंट होंगे, तो उनमें से एक मोनोमेरिक यूनिट दैट इज द 1,3-butadiene, एंड नेक्स्ट कैन बी द स्टाइरीन टू फॉर्म SBr, और इट कैन बी acrylonitrile टू फॉर्म Buna-N. So these copolymers are basically obtained from in the presence of sodium metal. I hope you understand it, and if you like my videos, please do not hesitate to subscribe my channel and take good care of yourselves. Thank you very much.